Alright guys, Big FM पे गुरीज over here and इस बार भी एक बिल्कुल नए टॉपिक पे varicose veins को लेकर myths and facts. We have someone very special and expert in his field, Dr. Rahul Jindal sir, who's the director of vascular surgery, Fortis Hospital, Mohali. Sir, how are you? I'm fine, Guri. How are you? I am doing excellent, sir. I think we shall start definitely. I think ये जो एक myth और facts का discussion है बड़ी rare होती है, साथ के साथ ही clear हो जाए। उसी actual facts को discuss करने के लिए we have with us you and of course varicose veins जब हम सुनते हैं तो we think about bulging blue veins that are removed through cosmetic surgery. But Yeah. काफी लोगों को नहीं पता होगा कि varicose veins can cause extreme pain and discomfort if left untreated. So आज उन्हीं common myths को हम address करेंगे and proper treatment क्या है so that all our listeners can understand it in a better and clear way. So, doctor, what according to you is the biggest myth varicose veins related? You see, when we started around 21 years back, all the minimal invasive treatments and the preventions, तो सबसे पहले important, सब patients का myth, not only among patient doctors also, was कि varicose vein treatment करने की क्या जरूरत है? ये तो cosmetic problem. So when we used to send, patients with a corporates also, they used to apply for an insurance. तो वहां पे भी ऐसे होता था कि डॉक्टर इसका तो अप्रूवल नहीं मिल सकता बिकॉज इट्स अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम. एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हेन जब वेरिकोस वेन्स मींस आपके वॉल्स खराब हैं एंड वेन्स के वॉल्स खराब है मींस ब्लड लेग से हार्ट पे नहीं जा रहा और ब्लड ऊपर नहीं जा रहा तो ये वेन्स डायलेट हो जाती हैं एंड द ब्लड बिकम्स स्टैटिक इन द वेन्स. जब ब्लड वहां रुका रहेगा तो इट विल कॉज प्रॉब्लम्स एट सम पॉइंट. द बिगेस्ट प्रॉब्लम वेरिकोस वेन्स की क्या है, इसमें पेन नहीं होता नॉर्मली. सो इसलिए पेशेंट्स दे इग्नोर द प्रॉब्लम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड अगर हम वेरिकोस वेन्स को बहुत लंबे तक छोड़ दें सो देन इट ग्रोस. इट विल ऑलवेज ग्रोस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड जब ये ग्रो करता है तब इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं. जैसे कई पेशेंट्स में हमारे पास आते हैं क्लॉट्स बन जाते हैं एंड दीज क्लॉट्स आर ए प्रॉब्लम बिकॉज दे कैन cause pulmonary embolism. Clots can travel into the lung and it's slightly risky issue. Secondly, it can bleed, so they can rupture. So a lot of patients, we get around 10 to 12 patients a month with a massive bleed. So like you lose 1 liter of blood when it bleeds. Not every varicose vein bleeds, but जिस patient में bleeding होगी तो फिर problems आती हैं. And third is they can progress करते रहेंगे and यहाँ पे भी maximum bulge होगा veins का, वहाँ पे skin gets spoiled and the skin becomes black, dermatitis हो जाता है and still if the patient does not get treated and you get a venous ulcer. So that's the last stage. And especially developing countries में अगर हम देखें तो venous ulcer का incidence बहुत ज़्यादा है as compared to the developed world. And this is just because of we don't treat veins early. So if you treat the varicose veins early, then हमारा basically ये जो venous ulcer वाली problems हैं ये चली जाती हैं. तो हम लोग एक साल से एक campaign run कर रहे हैं, venous ulcer eradication program. So we have been just running it and with the teaching, like these campaigns and all, so that people can learn that it's not a cosmetic problem. We need to treat them much earlier before the complication happens. I've heard that usually varicose veins की जो प्रॉब्लम है लेडीज की साइड से या वुमेन की साइड से बहुत सुनने को मिलती है, तो क्या ये सच है कि सिर्फ लड़कियों को ही होता है और इज इट only with women? Is that true? No, you see, सबसे पहले ना बहुत साल पहले एक स्टडी आई थी, एडिनबरा स्टडी. तो that showed that it happens more in women and men or something like that, and then there were subsequent studies. Women's में varicose veins हमेशा ज़्यादा होती हैं, approximately around 25%, as compared to men उसमें around 10 to 15% तक रहती हैं. But there are different studies to it. But you see, varicose veins, why it happens, that's very important. Mainly it happens because of hereditary reasons. It's a genetic disease. So if one parent has, then there is around 30% chances कि आपको भी varicose veins होंगी. अगर दोनों parents को varicose veins हैं, तो around 50% chances हैं कि बच्चों को varicose veins होंगी. So, it runs in genes. Second is pregnancy. Pregnancy is one of the very important cause. So if the more number of deliveries you will have, the more chances you will have varicose veins. So that's why females gets prone to that delivery pressures into the walls, you get it. Third is like obesity. So, your more weight related to that. Fourth is like an age. So varicose veins increases with age. So जैसे जैसे हम old होते जाएंगे, so the chances of varicose veins becomes more. So it's not that it happens more in it's not that it happens more in males. It happens more in females, and more females also wear shorter clothes.
in terms of that. So then they get to come to the hospital for medical attention because it's pain नहीं होता इस बीमारी में, तो इसलिए वो medical attention के लिए ज़्यादा commonly they come to the hospital, and men ignore them also. So true incidence बहुत मुश्किल है, but yes, they happen when in the clinical settings females में ज़्यादा दिखती हैं हमारे को. All right, sir, there's another myth के भागने से भी varicose veins ट्रिगर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें इन्वॉल्व होने से as a reason for developing varicose vein? You see, exercise makes our calf pump moves. तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, calf pump मूव करता है एंड ब्लड ऊपर जाता है. तो डेफिनेटली अगर हम वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, सिंपल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वेरिकोस वेन बढ़ती नहीं है. हमें तो अच्छा लगता है कि कम होंगी, बिकॉज एटलीस्ट दे विल बी स्टैटिक, दे डोंट प्रोग्रेस. तो इसीलिए हम लोग ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट्स को बोलते हैं यू मस्ट वॉक अराउंड, डू एक्सरसाइजेस, सिंपल रनिंग. बिकॉज बहुत सारे मिथ्स है कि लाइक even if you once you do some laser procedures on the varicose veins, then you stop doing exercises. Please do more exercises. It's good for you. But at the same time, any exercises which will increase बहुत ज़्यादा pressure abdomen के अंदर, जैसे हम बहुत heavy weight liftings करेंगे, अगर बहुत heavy weights उठाएंगे, it's not like simple weights routine life. It's like you go for 150 kgs weight liftings. So then in that cases, there is some studies which shows that अगर हम pressure बढ़ाएंगे, so then there is a chances कि the veins can recur. But otherwise, routine exercises, routine walking, no issues. And neither पहले से ना बाद में. All right, superb. So sir, let me ask you finally, solutions की तरफ बढ़ते हैं. किन तरीकों से हम varicose veins को prevent कर सकते हैं, so that हमारी audience भी, listeners भी कुछ ले जा सकें. So please give us some ways through which it can be prevented. This is the most important question, कि हम prevent कैसे करें. And बहुत ही simple है. And no money expense. Okay, you just need to eat less and do exercises more. तो कम खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, बहुत ज्यादा टाइट रिस्ट्रिक्टिंग क्लोथ्स नहीं डालने चाहिए, and plenty of walk, because that itself will prevent. And this not only prevent varicose veins, basically it prevents all cardiovascular deaths, Absolutely. related to all the blood vessels, because circulation requires an exercise and walking. That's the basic thing that everybody should know. Right, sir. And we were having a lot of cardiovascular deaths these days. So I think good Yes. exercise, good lifestyle is always the solution for everything. Very rightly said. और एक Yeah. बहुत ही इजी टिप्स है ये. आई डोंट थिंक इसमें से कुछ मुश्किल भी है फॉलो करना. मैं Yeah. सर ट्रीटमेंट पार्ट पे आऊंगा कि बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि ये भी मिथ है कि वेरिकोज वेन्स की जो ट्रीटमेंट बड़ी पेनफुल होगी. तो आई थिंक इस मिथ को भी हम दूर कर दें. No, absolutely not. You see, अगर बहुत early patients आते हैं, तो we give them a compression stockings, so they can get on with it. But now latest guidelines are showing that we should not waste too much time in patients wearing the stocking. पूरी life थोड़ी stockings डालते रहोगे. Stockings होती हैं, tight जुराबें होती हैं, जो patient को हर रोज सुबह डालनी पड़ती हैं शाम तक. पर patient रोज थोड़ी जुराबें डाल सकता है पूरी life. So then that's why अगर patient को varicose veins हैं, सबसे पहले हम symptoms देखते हैं उनकी क्या तकलीफ है. Second, then we do an ultrasound, and if we think on ultrasound patient की veins इतनी खराब हैं कि उनको treatment चाहिए, so then there are basically 3 treatments what we do. The foremost treatment is a thermal ablation. What do you mean by that is we close the walls. जो walls खराब हैं उनको हम laser या radio frequency से बंद कर देते हैं. तो उसमें कोई कट वगैरह नहीं लगता, कोई stitches नहीं होते हैं. The whole procedure is done under local anesthesia. It takes like 20 to 25 minutes, and it's mildly pain. It's not painless. It's like mild pain, which is very easily tolerable. And you can walk home, and you can actually आप अपनी routine activity शाम से ही कर सकते हैं. But laser and radio frequency में हमें local anesthesia देना पड़ता है थोड़ा सा. So then there is a new technology from 5 years we have been doing it, what we call it glue technology. And इसमें क्या करते हैं, instead of using the heat to close the vein, तो हम लोग gum use करते हैं, गूंद जैसे, like a glue, just like a glue. And it's a very nice technology, medical glue, जो हम यूज करते हैं. इसका एडवांटेज ये है कि इसमें हमें लोकल एनेस्थीसिया भी नहीं देना पड़ता, एंड पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव स्टॉकिंग्स भी नहीं देनी पड़ती हैं, एंड पेशेंट कैन एक्चुअली वॉक होम, एंड एक्चुअली इट्स लिटरली पेनलेस, एंड इट्स अ वेरी नीट टेक्नोलॉजी. एंड अभी 5 year रिजल्ट्स भी पब्लिश हुए हैं, तो विद ए क्लोजर ऑफ अराउंड 95%.
So basically we have these 3 technologies which are available, and हमारे पास अगर छोटे वेन्स खराब होती हैं तो उसको हम फोम से ट्रीट करते हैं. इससे स्क्लेरोजेंट होता है एक, उसको हम एयर से मिक्स करके हम वी मेक लाइक एक झाग बना लेते हैं फोम की तरह, एंड जैसे ही हम वेन के अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं और वो वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं. तो बेसिकली ये एक्स्ट्रा वेन्स होती हैं, इनको ब्लॉक करने से आपके हार्ट पे या लेग पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, एंड इट गिव्स अस वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स. All right, superb. I think so to all our guests, all our listeners and viewers जो ये देख रहे हैं, I think keep a check on yourselves, obviously, and also most importantly, keep a check on your loved ones because varicose veins are often being ignored by people who can be around us. And thank you, Dr. Jindal, for joining us today. I'm very sure that along with me, a lot of us have got to know about varicose veins, which can not only help us, but also someone close to us because someone close could have varicose. Keep a check, stay healthy, and let's win over varicose. Once again, Dr. Jindal, thank you so much for giving us your valuable time, sir. Thank you, Gauri. See you Thank soon. you, sir. Take Bye care, bye. sir. Likewise. Bye bye. Bye-bye.